बताओ भाई, तो पूरी क्लास हो जाती है, मुझे गुस्सा आता है मुझे। फिर मैं सोचता हूँ कि उनको विदा करूँ, जाऊँ। हाँ जी सर। हेलो आजकल क्या होता है? सर आजकल। हेलो हाँ बोलो बोलो, समझ आ रहा मुझे। सर। हाँ सर, तो आजकल जो है मोस्ट स्टडी चलती है सर, मैनयार्ड ऑपरेटिंग सीक्वेंस टेक्निक। फिर क्या करते हैं? सर इसमें जो है स्टेप्स वगैरह, जिस सारी चीजों का जो है सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कैलकुलेट डाल देते हैं कि बंदा कितने कदम चल रहा है, कितने मिनट क्या ऑपरेट कर रहा है, बटन दबा रहा है तो बटन दबाने में कितना टाइम लगेगा। उससे जो है टाइम स्टडी करते हैं कहाँ पे काम कर रहे हैं आप? सर एस्कॉर्ट्स में। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जो मेनार्ड का सिस्टम है ये बहुत पुराना सिस्टम है, और मेनार्ड की हैंडबुक लाइब्रेरी मिल जाएगी तुम्हें। तो होता क्या है कि ये बेसिकली आपने प्रोसेस बेस्ड टाइम बना लिया, और उस प्रोसेस पे कितना कितना टाइम लग रहा है उसको आपने डॉक्यूमेंट किया, और आपको स्टैंडर्ड टाइम आ गया है ना। तो हम लोग आजकल प्रोसेस बेस्ड काम करते हैं। आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपके लिखा है ऐसे करो, फिर इसको ऐसे करो, फिर इसको ऐसे करो, फिर इसको ऐसे करो। आप वर्कर को बिल्कुल प्रोसेस सिखाते हैं, और आप चाहते हैं वर्कर वही प्रोसेस फॉलो करे। क्यों? गलत बोल रहा हूं? और उस प्रोसेस के बाद फिर आप उसकी स्टडी करते हैं, टाइम निकालते हैं कितना उसने स्टैंडर्ड टाइम लिया उस प्रोसेस को फॉलो करने में। बताओ भाई, एस्कॉर्ट्स में और चाहे कहीं पर भी हो, चाहे मेडिसिन लाइन में हो, हर जहां हम लोग प्रोसेस बेस्ड काम करते हैं। ये दो लोग बड़े हैं, दोनों ने इंडिपेंडेंट काम किया, लेकिन हम लोग आजकल दोनों को मिला के ही मोशन एंड टाइम स्टडी की बात करते हैं। क्योंकि टेलर अमेरिकन था जिसका नाम पहले आ जाता है, और हम लोग टाइम एंड मोशन स्टडी बोलते हैं। लेकिन होता ही क्या है कि मोशन एंड टाइम स्टडी, पहले हम मोशन ठीक करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं, फिर हम टाइम स्टडी करते हैं, है ना? क्यों? पहले हम मोशन सही करते हैं, फिर टाइम को स्टडी करते हैं। टेलर ने वर्क को एलिमेंट में ब्रेक किया, वही प्रोसेस, बट उसने हर एलिमेंट को टास्क बनाया और टास्क की स्टडी करी। तो दो तरह की स्टडीज में डिवाइड हो गया। एक तो एनालिटिकल, जिसमें एनालिसिस कर सके, आपने एलिमेंट्री मूवमेंट में ब्रेक किया, उसको पिक किया, अननेसेसरी मूवमेंट को आपने हटा दिया, स्टॉप वॉच यूज करी और उसको रिकॉर्ड किया। एक है कंस्ट्रक्टिव, आपने ऐड किया ग्रुप्स को, कॉम्बिनेशन को ऐड किया सेम सीक्वेंस के काम। तो दो तरह के, एनालिटिकल हो गया जिसमें आपने एक एक एलिमेंट को एनालाइज किया, और कंस्ट्रक्टिव में आपने दो सिमिलर एलिमेंट को जोड़ दिया, फिर उनको आपने रिकॉर्ड किया। ये दिया हुआ है, टेलर ने शॉवलिंग समझते हैं, कोयले को खोदना। तो कोयला जो था वो केवल स्टील प्लांट में काम करता था, तो वहां पे कोयला आता था और वो अंदर जाता था फर्नेस के पास, बहुत दूर, आधा मील 1 मील दूर। तो वर्कर जो थे उसको शॉवल करते थे, अपने अपने उसमें बॉक्स में भर के और ले जाके वहां छोड़ के आते थे। तो उनके पास सबके अपना अपना अलग शॉवल होता था, अपना अलग अलग फावड़ा होता था उनके पास, और 500-600 वर्कर होते थे जो कि शॉवल करते थे और ले जाके कोयला वहां डालते थे। आप कहेंगे भाई बेल्ट लगा लेते, ट्रक्स लगा लेते, एक रास्ता बना लेते, कोयला वहीं उतारते, ठीक है। अभी भी आजकल बेल्ट होती है, बेल्ट ड्राइव्स होती हैं जो कोयला वहां से वहां ट्रांसफर करती हैं।
मोशन स्टडी जो डेवलप हुई 1885 में, गिलब्रेथ हस्बैंड वाइफ दोनों थे, उसने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया। उसने ये कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम करना ज्यादा टाइम लगता है वर्टिकल लाइन के थ्रू। ब्रिक लेइंग में ईंटा लगा रहे हैं तो वर्कर जो है हॉरिजॉन्टल चलता है, यहां से मान लीजिए 5 मीटर ईंटा लगाना है तो एक एक रद्दा लगाया पूरे में, उसका टाइम लगता है अगर वो वर्टिकल लगाए। बट हम लोग तो हॉरिजॉन्टल ईंटा लगाते हैं, वर्टिकल तो लगाते नहीं, क्यों ऐसा करते हैं? कोई बताएगा? बताएगा कोई कि हॉरिजॉन्टल ईंटा क्यों लगाया जाता है, वर्टिकल क्यों नहीं लगाते हैं? मेरी क्लास सो गई, लगता है सब बर्तन मांज रहे हैं घर बैठ के, गायब हो गए मोबाइल ऑन करके। अभी अपने अपने घर आए हैं। आज मैं टेस्ट ले लेता हूँ, चलो अच्छा ये सब सही हो जाएगा, आज यही करेंगे। आज सेशनल टेस्ट की जहां पे हम डेली टेस्ट ले लिया करेंगे। सर जो छत डालने में कह रहे, ईंट लगाने की बात कर रहे हैं सर। छत में दीवार के लिए ईंट लगा रहे हैं, वर्टिकल लगाते हैं या हॉरिजॉन्टल लगाते हैं? नहीं सर, वो तो सर हॉरिजॉन्टल लगाते हैं होता सर। है सर। हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, पहले एक ईंट रद्दा डाला आखिर तक गए, फिर दूसरा रद्दा डाला आखिर तक गए, ऐसे करते हैं ना? जी सर, क्यों करते ऐसे ही उसमें डार्ट में भी डलते हैं सर, हैं? हॉरिजॉन्टल 2 लेयर। आप चेक करते हैं कि ईंटे का जो लेवल है वो बराबर से रहे। हाँ, वो तो उससे अगर आप धागे से कर हॉरिजॉन्टल लेते हैं। लगाएंगे, वर्टिकल लगाते रहेंगे तो ईंटे का लेवल बराबर नहीं रहेगा और बराबर से ईंटे नहीं लगेंगे। ईंटे भी सर थोड़े से छोटे बड़े होते हैं तो उसमें सर उससे सीमेंट और जो मसाला होता है उससे मेंटेन करते हैं। तो आप हॉरिजॉन्टल ही लगाते हैं, आप देखते जाते हैं कि कोई बड़ा ईंटा छोटा ईंटा बीच में कोई चीज ना हो। हाँ। एक पूरी लाइन बिछा के, एक रो उसके बाद बिछा के, next अगली रो, फिर तीसरी रो, फिर अगली नेक्स्ट लेयर शुरू करते हैं। आप वर्टिकल नहीं जाते, है ना? जी सर, वो तो है। तो ये प्रोसेस की बात है, क्योंकि इसमें आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो ये ब्रिक लेइंग की फिल्म जो है, ये तीनों और सर इसी वजह से सर जो छत में डालते हैं, इसी वजह से डालते हैं वो हॉरिजॉन्टल। नहीं, छत को छोड़ी, हर छत तो हॉरिजॉन्टल पर चीज होती है, मैं तो दीवार की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये दिखाई पड़ रही है फिल्म आपको? जी सर।
ये ब्रिक लेइंग को बता रहा है, इसको आप लोग नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा। और ये गिलब्रिथ का ब्रिक लेइंग का एक उस पूरी मूवी में से एक पार्ट निकाला गया है। इसके फोल्डिंग समझते हैं, पहाड़ पहाड़ को बोलते हैं इसके फोल्डिंग। देखिए ये मशीन है, ये आपको टाइम निकाल दे जोड़ रही है। ये वर्कर लोग जो है ये ब्रिक लेइंग कर रहे हैं, ईंटे पे मसाला लगा के ले कर रहे हैं। देखिए हर बार उसको जो है नीचे जाना पड़ता है और नीचे से मसाला लेना पड़ता है, ईंटा लेना पड़ता है। उसके मोशन बहुत बढ़ गए हैं। तो अब आपने स्कैफोल्डिंग लगा दी, स्कैफोल्डिंग में पहाड़ पे ईंटा रख दिया, यहाँ पर मसाला रख दिया। अब उसको चढ़ना नहीं पड़ेगा, अब उसकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत कम हो गए। अब जो है ईंट का जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर की बढ़ जाएगी। स्कैफोल्डिंग जो है समझते हैं दैट वाज द बेसिस फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। और सर इसके फोल्डिंग में भी तो मसाला और फिर ईंट पहुंचानी पड़ेगी, उसके बाद ही ना होगा सर, उसके लिए अलग से लेबल लगते हैं। वो ऐसा होता है कि इसके फोल्डिंग पर मसाला पहुंचाना जो है आसान होता है। 15 बार आप हाथ पांव नीचे लाएंगे मुश्किल होगा, इसके फोल्डिंग पे वो अलग हो जाएगा। सर देखिए ये वर्कर जो है काम कर रहा है, जॉब बना रहा है, और जो जॉब बना रहा है उसको ये टाइम कर रहे हैं। तो स्टडी कर रहे हैं कि कैसे वो जॉब को कितने टाइम में जॉब बना रहा है। फिटिंग का जॉब है, उसको हर जॉब को फिनिश करना होता है, फाइल करना होता है, आप उसको फाइल कर रहे हैं। आपने सिंगल हैंड पैटर्न रखा था, अब आपने 2 हैंड पैटर्न रख लिया। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन ये फिर देखिए सिंगल हैंड पैटर्न क्या है।
ये असेंबल कर रहा है ब्लूप्रिंट देख देख के। ये दिखा रहे हैं कि रेस्ट पीरियड प्लेस कर देने से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। जब रेस्ट पीरियड नहीं था तो वर्कर कम काम कर पा रहा था, आपने उसको प्रॉपर रेस्ट पीरियड दे दिया। तो ये वर्कर जो है वन हैंड का वर्कर है, इसके हाथ नहीं है। काफी वर्कर लोग जो हैं वॉर में खराब हो गए, उनके हाथ कट गए, तो उनको काम दिया गया कि सिंगल हैंड से काम कैसे किया जाए।
सिर्फ एक ही हाथ से काम कर रहा है, देखिए वर्कर, वन हैंडेड। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस बनाया गया कि सिंगल हैंडेड कैसे काम किया जाए, एक हाथ से। तो स्पेशल टाइपिस्ट बनाए गए, टाइपराइटर बनाए गए जो वन हैंड से लिखते हैं। और उन्होंने उसको अब टाइप करने का भी सिस्टम जानते होंगे, QWERT सिस्टम है, कैसे टाइपिंग की जाती है। और उस QWERT सिस्टम में कैसे आपको ट्रेन किया जाए कि आप बहुत अच्छी टाइपिंग कर लें। तो जो आपका QWERT सिस्टम है, दैट इज डेवलप ऑन दिस फिलॉसफी। अभी तो बंदा सही है ना। तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकाली गई कि किस किस फिंगर की कितनी यूज होती है और किसके बाद कौन सा वर्ड रिलेटेड है, उसके हिसाब से आपका कीबोर्ड डिजाइन किया। हो गया, सील तो बच जाएगी इंजेक्शन यूनिट की। मशीन की सील जरूरी है, वो जरूरी है। अरे ये रुक जा। अरे भाई कर तो दिया, और क्या, आप तो चेंज करने के लिए बोल दिया, और क्या चाहिए बताओ। हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी हाईलाइट कर देगा ना। ठीक है, ये देखिए। हेलो, हाँ आरिफ, तुम्हारी आवाज आ रही है पूरी, और ऑफिस जो है चल रहा है यहाँ पे भी। हाँ, तो ये आपने टाइपराइटर को ऐसे डिजाइन किया।
ये बेसबॉल है अमेरिका के, तो उन्होंने उसकी स्टडी की और कहा कि कैसे इसको और एफिशिएंट बना जाए। ये हडसन रिवर में कैसे उन्होंने जल्दी से पार किया जाए। सो ही ट्राइड टू सी दी प्रोसेस विद स्टैंडर्ड टास्क। अब ये देखिए ट्यूमर को कम से कम टाइम में कैसे रिमूव किया जाए, ये इसका पूरी स्टडी हो रही है। मेडिकल में बहुत ज्यादा स्टडीज हुई, टाइम स्टडी, इसका बहुत ज्यादा यूज मेडिकल में हुआ। सारे सर्जिकल प्रोसेस जो आपके डिजाइन हुए हैं सब इसी से हुए हैं, टाइम एंड मोशन से। ये साइक्लोग्राफ, क्रोनोसाइक्लोग्राफ बना रहे हैं ये। So Gilbreth's aim was to identify the best way of performing a job. सबसे अच्छा मेथड किसी जॉब को करने का क्या होगा जिसमें कि वर्कर की फैटीग रिड्यूस कर दी जाए, बॉडी मोशंस कम हो जाए, अननेसेसरी मोशंस निकाल दिए जाए और सीक्वेंस जो है वो ऑप्टिमल हो और लॉजिकल हो। जो सीक्वेंस ऑफ मोशंस है वो लॉजिकल और ऑप्टिमल हो। उस तरह से उसने मोशन स्टडी, माइक्रो मोशन स्टडी,
डेवलप करा। तो मैक्रो मोशन स्टडी में क्या किया, उसने फंडामेंटल एलिमेंट्स और एक जॉब के फंडामेंटल स्टेटमेंट्स को उसने कैमरा से स्टडी किया, मोशन पिक्चर कैमरा से। और उसने दो तरह का काम किया, साइक्लोग्राफ और क्रोनोसाइक्लोग्राफ। साइक्लोग्राफ जिसमें कि जो वर्क हो रहा है उसका ग्राफिकल सीक्वेंस दिखाया आपने। आपने क्या किया, वर्कर की उंगली पे एक बल्ब बांध दिया और वर्कर से कहा काम करो, और उसको स्टिल कैमरा से ऑब्जर्व किया। स्टिल कैमरा में जो वर्कर ने काम किया लाइट के बिना, वो लाइट और उसके बल्ब लगाए उसकी उंगली पे, तो लाइट सिर्फ बल्ब पे आ रही है। जब आपने स्टिल कैमरा से फोटो खींची तो एक लाइन आ गई, व्हाइट लाइंस आ गई। व्हाइट लाइंस बता रही हैं आपको कि वर्कर का हैंड का मूवमेंट कैसा है, वो साइक्लोग्राफ है। और जब इसमें आपने इंटरप्टर लगा दिया तो आप इसमें एक्सेलरेशन डिसेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोनोसाइक्लोग्राफ। इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया और बल्ब को आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो क्रोनोसाइक्लोग्राफ। ये बेसिकली आपका टाइम एंड मोशन स्टडी का एक पार्ट था, जो आप समझे कि व्हाई वाज टाइम एंड मोशन स्टडी डन। मैं फिर से वो वीडियो दिखा रहा हूं आपको, मैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। देखिए वर्कर जो है असेंबली जॉब्स कर रहे हैं और उसको आप कैमरा फोटो खींच के आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। In the first decades of the century, America was speeding up. Photography not only documented America's growing industrial might, it was put to work as a tool of the modern assembly line. In this speeded up world, factory owners looked to the camera to make their workers move even faster. Frank Bunker Gilbreth took his first step into the field of management in 1885 when, on his second day as an apprentice bricklayer, he questioned why he was being taught several different methods for laying bricks. His interest in finding the best method led to his development of motion and fatigue studies. ये देखिए ना, ये जो लाइट का ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, ये साइकिल ग्राफ है। ये वर्कर जो काम कर रहा था उसको आपने कैमरा के थ्रू, स्टिल कैमरा के थ्रू फोटो खींची उसकी। Of motion and fatigue study. Early in the century, Frank Gilbreth used photographs to break a worker's every action into the smallest units, revealing every unnecessary movement.
He studied the fastest workers in order to teach maximum efficiency to everyone. In Gilbreth's cyclograph technique, he attached flashing lights to a worker's fingers to indicate the length of time a motion would take. Soon Gilbreth's photographs were changing the lives of everyone from golfers to oyster shuckers. Gilbreth observed that surgeons took more time looking for their instruments than they did in performing the operation itself. He suggested a new procedure. Keeping an eye on the incision, the surgeon would extend an open palm to the nurse and utter the now famous words, "Scalpel, please." Some accused Gilbreth of turning skilled workers into robots, but the bosses loved his techniques. Gilbreth even brought his zeal for efficiency to his own large family. His children got their revenge when they wrote about home life with their eccentric father and called it cheaper by the dozen. Gilbreth died of a heart attack at age 55. ये क्या लिखा उसने, हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 55? इसका मतलब क्या, क्यों बताएगा? कोई बोलेगा? Anybody who can tell me why it is like said that he died at the age of 55 only with a heart attack? Anybody? सर वो उसको घबराहट हो जाएगी इतना ज्यादा, जो वर्क उसका मतलब एक मोनोटोनस जॉब जो करता रहेगा उसकी वजह से इसको मतलब एक वक्त के बाद ऐसा लगेगा कि वो घबराहट हो रही है उसे और उसकी वजह से इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कहा गया। गिलब्रेथ जो था इतना दीवाना था मोशन स्टडी का कि लोगों के जॉब को अलग करना, जॉब को डिजाइन करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कैमरा स्टडी करना, कि हर वक्त स्ट्रेस्ड रहता था, सीवियरली स्ट्रेस्ड। He was always trying to find faults with the system and improve them. So he died at the age of 55. Gilbreth died at the age of 55. मतलब आप जितना लोगों में स्ट्रेस डेवलप करेंगे, आप में भी वापस स्ट्रेस उतना ही आएगा। कंसर्न ले लिया बहुत ज्यादा। नहीं मतलब आप में तो मोशन स्टडी करके मतलब जो वर्कलोड है उसको कम करना और उसकी स्पीड अप करना, तो स्पीड तो एक वक्त पे आगे कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट करेगी बॉडी को, तो जो टाइम लाइन है बॉडी की उससे पहले ही मतलब एग्जॉस्ट हो जाएगी। दिस इज अब मैं आपको ब्रीफ दिया मोशन टाइम स्टडी के बारे में, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी के
सर आवाज नहीं आ रही है। वीडियो दिखाई पड़ रहा था आपको? वीडियो दिखाई पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था? यस सर, बट आवाज नहीं थी। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी है। ये 22 प्रिंसिपल्स हैं, 3 पार्ट में है। हैंड मोशंस हैं, फंडामेंटल हैंड मोशंस, और बाकी हैं। वो आप लोग को मैं दे दूंगा बाद में, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये ना हमारा अपना वीडियो है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसमें सर गूगल क्लासरूम में सर पोस्ट कर दिया कीजिए। हाँ, मैं कर दूंगा, क्योंकि उसमें क्या है उसमें सर जैसे नोट्स वगैरह भी रहता है तो सर देखने में आसानी हो जाती है। म्यूट जब करते हैं तो वो आवाज उनकी म्यूट हो जाती है। अच्छा सर। तो मैं अभी आपको आ रहा हूं अगले पोर्शन पार्ट पे। सर मोशन स्टडी और टाइम स्टडी जो है आप लोग, एक मिनट जरा मैं इसको देख लूं। इसका ये नोट्स इसके हमारे पास में मोशन स्टडी का ये कहीं पर नेट पे मिल जाएगा। मॉड्यूल 3 लेक्चर 8 प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी। मैं इसको नेट पे सिलेक्ट करता हूं। अच्छा, ये एक मिनट जरा, एक मिनट मैं नेट पे देखता हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी, नहीं कहा, ये आ गया। बिल बढ़िया मिल गया मुझे। ये एनपीटीएल का पार्ट है। ये मैं चला रहा हूं, एनपीटीएल का वीडियो है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी। इसके बारे में एक ब्रीफ डिटेल है और इसको आप सुन ले। उसका मैं नोट्स आपको मैं दे दूंगा। developed over a long period of time by the persons who have been working in the area of work system design, work study, for improving the method so as to reduce the operator fatigue and the time required for carrying out the job. In industry, a lot of work is carried out manually by the operators. So if the method which involves the manual work is developed in such a way that it reduces the extent of movement, and the movements are developed in such a way that it takes less time to the operator to complete a given job, then the productivity of the system can be improved. At the same time, the less fatigue will also be experienced by the operator during the operation. So these principles related to the motion economy have been developed over a period of time based on the experience. These principles fall in 3 broad categories. These are related with the use of human body, the workplace arrangement, and the design of tools and equipments.
The principles related with the use of human body are related with the way by which the human body parts like hands, feet are to be used for effectively performing the job with the minimum effort and the minimum time, while the workplace arrangement is related to the design of the workplace in such a way that the given job can be done with the minimum effort by the operator and it takes less time, so that operator doesn't require unnecessary rest. Design of the tool and equipments, the principles related to the design of tools and equipments are also related with the designing the control devices and the display devices, tools, levers, handles in such a way that operator can operate them easily, effectively, without much effort, and so as to reduce the time related with the operation for carrying out a given job. These principles will be covered one by one in detail. The principles related with the use of human body are, say, continuous curved motions should be preferred over the straight line motion, because more focused efforts are required for performing the straight line motion as compared to the continuous curved motions. So as and when it is possible, continuous curved motions should be designed in the work method, and they should be included suitably. Use to the lowest practicable classification of the body parts. The body parts like fingers and wrist, the finger, wrist and elbows, these have been classified according to the combination of their use, and this classification will be covered in the next slide. But here, as much as possible, the lowest classification of the body parts should be used first, so that the related fatigue can be reduced. The lowest is the classification of the body part, minimum will be the fatigue experienced by the worker during the use. Both the hands should begin and end their motions simultaneously. The work methodology should be designed in such a way that both the hands remain busy and they should start and end their motions simultaneously. And both the hands should not be idle except during the rest periods. The methodology should be such that the hands should remain engaged, and both the hands should not be idle in any case, except when the rest is being done by the worker to recover his muscles and overcome the fatigue. The hand motions should be symmetrical and simultaneously away from or towards the body. The movements of the human body parts should be designed, or the hand motion should be designed in such a way they are symmetrical and simultaneously carried out either towards or away from the body. So these classification, as I have said earlier, that the classification of the body parts from 1 to 5 includes is like this, where classification 1 covers the fingers motion only, the classification 2 includes the finger and wrist motions, and classification 3 covers those motions which include finger, wrist and arms. All these 3 body parts are used in carrying out the certain motions. Those motions will be falling in classification 3. When the fingers, wrist, lower arm and upper arm is used for carrying out motion, then it falls in classification 4. And when finger, wrist, lower arm, upper arm and the trunk is also used to carry out the body motions, then it falls in classification 5 category. If the motion is carried out using the lowest possible classification, that is finger, then it will be causing the minimum fatigue, and the maximum fatigue will be experienced when the highest classification of the body parts are used for achieving a given motion. Some other principles related to the use of human body are like momentum should be used in assisting
to assist the worker in carrying out the given job. If the momentum is used effectively, the efforts required by the operator to carry out the same job will be reduced. But in many cases, momentum comes against the job which is being done, and in those cases momentum is to be overcome first manually, and under those cases momentum should be reduced to the minimum level if it is to be overcome manually by the operator during the job. And the middle finger and thumb should be used for handling the heavy loads, as these are the strongest fingers. So work should be designed in such a way that the strongest fingers carry the maximum load, while the light loads, for the light loads, the index fingers, fourth finger and the little finger should be used. So according to the capability of the fingers, the work should be designed so that either middle finger or thumb is used for the heavy work, while other fingers are used for the light loads only. Wherever possible, the use of feet should be encouraged so that work can be carried out either simultaneously by both the hands and legs, or alternatively by hands and the feet, so that operator doesn't feel fatigue and work is also doesn't remain monotonous. The twisting motions should be performed with the elbows in bent condition. The next principle in the principles of motion economy is related with the design of workplace. The workplace is to be designed in such a way that whatever the tools, equipments, raw material is to be used, the same can be easily, effectively used by the operator with the minimum effort and the fatigue. The workplace should be designed keeping in mind certain aspects like fixed location for each tool and material should be provided so that it will not require unnecessary searching and the selection related steps, because a lot of time is consumed in finding the desired item and then to get it for carrying out the further operation, either assembling or further processing of the raw material or using the tools for further processing. So fixed location should be provided for each tool and the material so that the unnecessary search and the select related steps can be eliminated. And the gravity bins and drop deliveries should be used to reduce the reach and the move related items. These are other steps which can be reduced by encouraging the use of gravity bins and the drop deliveries. All materials and tools should be located within the normal working area. If the distance of the tools and the materials to be used from the body is increased, then it will simply increase the efforts which are to be carried out by the worker. That is why the material and the tools are to be located and placed in such a way that operator can use them easily with the coverage of the minimum distance, and that is why these should be located within the normal working area so that worker will not be required to put unnecessary extra effort for carrying out the job. This should be as close to the point of use as possible. The places for tool and work material should be as close to the point of use as possible so that distances to be covered by the material can be reduced, and so that the fatigue of the operator related to the handling of the tools and the raw materials can be reduced, and the total time of the operation also can be reduced. So if these are placed as close to the point of use as possible, it will reduce the operator's fatigue, and the time required for carrying out the job also is reduced. Some other points related with the design of workplace detail later on, but these devices should be designed in such a way that they can be used easily,
quickly without any error. The third principle related with the use of motion economy is related with the design of tools and equipments. The design tools and equipments should be designed in such a way that they need minimum attention of the worker and they need minimum effort from the operator during the operation. And for this purpose, the use of proper coding of the control devices in the tools and equipment should be there so as to maximize the speed of work and minimize the error during the operation. Inefficient coding, improper coding leads to the accidental wrong use of the control devices, which simply leads to the sometimes accidents or poor quality of the jobs. That's why the proper coding of the control devices is important to maximize the speed of the work and minimize the errors related with their operation. So all levers, handles, wheels and other control devices should be located in the most preferred places so as to use the mechanical advantage. The devices which are to be operated by the worker should be located in such a way that operator can use them with the mechanical advantage where less efforts are required to carry out the same job. So the location will decide the extent of the mechanical advantage is being used in their operation. Efforts should be made to locate the devices and the levers and handles in such a way that they need less effort and less force to operate them. And that is possible by using the mechanical advantage related factor after a proper location. Some other points related with the design of the tools and equipments are like use of jigs and fixtures to hold the tool raw material and for guiding of the tool should be used. Fixtures reduce the time required to hold the workpiece in proper position and they also reduce the efforts required for holding of the workpiece, while the use of jigs reduces the time and efforts required for holding the workpiece and also guiding the tool in proper position where it is required. The role of fixtures is mainly to hold the workpiece, while fixtures in addition to holding the workpiece also guides the tool in the position where they are required. So use of jigs and fixtures will not only reduce the efforts required for carrying out a given job by the operator, but will also save a lot of time. Use of stop guides to reduce the unnecessary manual controlled positioning. Stops should be used as and when it is possible so that manually it will not be required to start or stop or control the motions as per requirement. The systems will automatically respond if the stops and guides are used, and that will help to avoid the unnecessary manual controlled positioning of the tool or of the workpiece during the operation. Some other principles related with the design of tools and equipments are like the design of workplace layout should be done keeping in mind some of the following points, like height of the workplace should be determined in such a way that it allows the working of the operator in standing and the sitting positions alternatively, and the operator is able to sit on the chair comfortably for long time as required. The design of the operator chair, if work is to be done in the sitting posture, should be such that it can be used by the operators of the different heights. So for that purpose, it may have the provision for adjustment of the height of chair
So that kind of chairs, such kind of chairs are frequently used in the computer centers, where people of the different heights can use those chairs for the operations required. So the adjustable range, design of adjustable range features is principle is used for designing such kind of chairs, and allow the use of anti-fatigue mats for standing of the operators, so that related fatigue can be reduced, and the determination of the location of tool, materials, control display devices in such a way that the operator can use the tools and the materials with the minimum effort and fatigue, and at the same time error free and easy control is possible with the proper designing and location of the control and display devices. For location of the tools and the controls, as we know that with the increase in distance of these tools, materials and the controls from the body, the distance to be moved by the body member increases. So increase in distance of the body member movement during the work increases the muscular effort, the control and the time required for carrying out the job. And that is why the tools, materials and the controls should be located in such a way that the distance of the body member movement during the work is minimum, so that the related muscular effort, control and the time required can be reduced. And therefore tools, materials and controls etc. should be located within close reach of the operator. The location of the tools, materials and controls is decided in light of the anthropometric data of the operator or the group of the operators, and that is based on the normal working area concept and the maximum work area concept. The figure in the next slide will show what is the normal working area. Normal working area is one where the area which can be covered by the hand without stretching the whole arm, while the maximum area includes the area which can be covered by stretching the full arm during the work. So these areas can be seen in the horizontal plane also and in the vertical planes. So for a group of people, average normal working area and the maximum working areas have been identified. You can see in this slide shows the arm when it is in fully stretched, and arm is not stretched, upper arm is in the normal condition and only the lower arm portion is stretched. So the area which is covered by the stretching of the lower arm only up to the fingers on both the sides, it comes under the category of the normal working area. Here if you can see here, from this elbow to this fingertip, this entire area which can be covered by this right hand and the area which can be covered by the left hand indicates the normal working area, while this is the distance of the maximum possible reach of the hand when arm is fully stretched. It is of say about 60 centimeter, and when it is fully stretched, this entire area, this radius indicating the entire area which can be covered when arm is fully stretched. This area is termed as the maximum working area, and this area is for the left hand, maximum working area for left hand, and this indicates the maximum working area for right hand. The normal working area normal working area is in the radius of the 40 centimeter, and the maximum working area in the radius of 60 centimeter, and the 30 centimeter is considered as the average width between the two hands.
what we have seen was the word horizontal in the working areas in the horizontal plane. Now we can see the working area in vertical plane. Here from the shoulder to the maximum stretch of the hand is of 70 centimeter. The maximum for extended arm indicated by this will be the maximum working area, and here it is of 42 centimeter in the vertical plane, indicating the normal working area. Normal for forearm, and the maximum for extended arm is of 70 centimeter. So effort should be made first to locate the tools and the devices in the normal working area first, so that the tools and the raw materials will be as close to the body as possible, and thereafter the things which are less used and needs less effort can be located away from the body, and they can be located in the maximum working area region. Location of the control and display devices for effective utilization is very important, because if these have been located in such a way that either operator cannot operate them effectively or cannot operate them in such a way that what result he is going to get, or he is not able to see the kind of results which are being achieved through the display devices, then that indicates that the control and display devices have not been located properly. The control the control and display devices should be located in relation to each other, so that when control device is operated, operator is able to see that what kind of response he is getting by giving the inputs through the control device. And it is important that control devices and display devices are located in such a way that he can see response, so that the control devices can be operated easily, and quickly they are identified and they are operated easily. Easy identification of the control devices is important for easy operation. At the same time, to reduce the operational error in emergency situations, it is necessary that what kind of response he is getting by when control device is adjusted through the display devices. Display devices giving the status or the kind of change which is taking place with the change of control through the control devices. So to locate the control devices, the best possible area is selected. The control devices and display devices are located in such a way that when control device is operated, display can be seen in the display device. That's the first thing. And when the control devices are to be located, some of the points are kept in mind, like what kind of performance of the operation which is being controlled, the kind of human sensation required for controlling the things, and the anthropometric aspects required in locating the things properly, and the biomechanical features of the body, means the kind of movements and the forces required for operating the control devices. So these consideration of these four factors will help in locating the control devices in optimum manner. Performance will indicate the criticality of a particular control in success of its operation. Human sensation will indicate that which kind of how the body will be getting the sense when the device is operated, control device is operated, like touch is to be used, or just means by seeing it, it will be used, or by hearing it will be used. So anthropometric data indicates that what is the maximum range or the minimum range which can be covered if it is located at particular place, and what is the average anthropometric data of the human being which can use a given control set of the devices
or the display devices. Biomechanical feature indicates the kind of forces, speed of movement, accuracy of movement which is possible by the body part which is to be expected to perform for controlling the device. So these four factors are considered for locating, for identifying the optimum area, and in that optimum area the control devices will be located. So based on the consideration of our four factors, a best possible area is identified for a group of persons, for a group of the tools. In general, these are the general points which helps to find out the best possible space for locating the control devices. Like visual display should be located 10 degree below the horizontal of the human being sight level, and it should be at 10 to 15 centimeter radius. The optimum location for hand control should be within easy reach of the hand, and based on the above consideration, a general area is selected. So how to use the best possible area which has been selected for locating the different control devices which are available, for locating in optimum manner. Certain principles are used based on which the control devices are located in the best possible area, and these principles are related with the location of the control devices are based on importance, the frequency of use, the sequence, their functions, and the sequence of operation. So the control devices should be located in light of these four principles. These are the importance, frequency of use, functions which are performed by the different controls, and the sequence of their use. So based on the importance, the control devices may be in use of the different types. Some of the control devices may be used just to switch on and switch off the things, and some of the control devices may be there to regulate the speed, feed, depth of cut, or to achieve any specific function. So the functions, depending upon the criticality of the functions, control devices are located as per needs. So the based on this principle of importance to locate the control devices, the most important items or group of items is located first within the normal working area in the best possible position. The most importance is given to those which are very important for the smooth functioning of the process. So the most important controls will be placed in the normal working area in the best possible positions first, and thereafter other items or group of items is selected and located within the other areas which are left. So the next important component, an item or group of items, is then selected and located in the best location within the remaining area. So according to this principle, the optimum use of the best possible space is decided on the basis of importance of the particular control device. The second factor which is also used for deciding where the controls are to be located in the best possible area, that is the frequency of use. According to this principle, the controls which will be used to the maximum level and with the maximum frequency, they are located first in the best possible area. So the items with the greatest frequency of use has the highest priority for location at the optimum position, while the remaining items are located in the remaining area using the same principle. So according to this principle, control devices are located on the basis of the frequency of their use.
another principle which is used for locating the control devices is that function. The control devices which are used for performing the similar type of the functions are grouped at one place. So grouping of the items according to their functions is done according to this principle. Like all control devices functionally related may be grouped together and located at one place. For example, if some of the control devices are used for increasing or decreasing the speed or feed, then they will be grouped at one place. Like on off controls are grouped at one place. So the devices which are of similar type in nature of their function, they are grouped at one place so that operator can use them effectively without making extra efforts to identify and locate them where they are so as to use them. Some of the examples are like feed and speed controls are located at one place, are grouped in one category. Switching on and switching off the systems also placed at one place. Another principle which is used for locating the control devices is the sequence of use. Some of the control devices are used in one particular order the items that are located, items according to this principle are located according to use of their sequence. For example, an assembly is made by assembling the sub-assemblies in a specific order. In the same way, if the control devices are to be used in sequence, then accordingly they may be located either from the top to bottom or bottom to the top, or left to right or right to left. So based on the sequence of use, the control devices can be located. From the motion economy, it is important that the sub-assemblies are located in the sequence of their use, but sometimes it is not found very effective because sequence of use may not lead to the most effective motion, or it may lead to the excessive time required for search and select the items which are to be used during the operation. However, from the principles of economy point of view, it would be better if the controls and sub-assemblies are located in the sequence of their use. So this is the point, that for better economy and better economy of the work and for increased productivity, it is important that all location of all tools, materials and the controls be fixed in such a way that the search and select is minimized. It is not necessary that the control devices should be located only in light of the principles of motion economy. It should also be seen that the control devices, tools and materials are located in such a way that the search and the select related activities can be minimized, so that the time required for carrying out the job can be reduced and the operator efforts also can be reduced. And therefore, the engineering systems which will be used by the worker while carrying out the job should be designed in such a way that it needs the less effort from the operator for performing the desired job. For designing the mechanical systems which will be used by the worker during the operation should be for designing the systems which will be used by worker during the operation should be based on the anthropometric aspect of the worker who will be operating the mechanical systems. For designing the mechanical systems, some of the points are kept in mind, like what are the important and the relevant body dimensions. Like the mechanical system will be operated by the which part of the body, whether feet will be used or hands will be used, knee or toe will be used. So according to the type of the body part which is required to operate the mechanical system, the dimensions of the body parts are
kept in mind while designing a mechanical system, and defining the relevant population who will be using a given mechanical system. Like mechanical systems can be used by the variety of the people, like a chair can be used by the adult, by the army man, by woman, or by the KG children's. So for the different group of the people, since the anthropometric data is different, so if the population, targeted population for a given mechanical system is defined properly, then it will help to get the idea about the range of the dimensions which can be there as far as height, length, or the weight is concerned. So after defining the group of population and the important body dimensions which are required to be used in operation of the mechanical system, these are used in designing of the mechanical system. Like defining the population helps to establish the dimensional range that can be considered in design of the mechanical system. And once the data about anthropometric data about the targeted population has been received, and the average and the dispersion of the data has been obtained, what principle is to be used is decided. The mechanical systems which can be used by the general public should be designed using using three different types of the principles. These principles are designed for extremes where it is kept in mind that what is the maximum or the minimum dimensions of the individuals who can use a given mechanical system. So design for extreme is based on that what is the maximum possible dimension of the human body part who can use the given system. On the other hand, the design for adjustable range is if the design for the adjustable range principle is used for designing the mechanical systems, then it allows the use of the mechanical system by the population having wide range of the anthropometric data. Like if the people of the smaller height can use the one chair, then the people of higher height can also be used the same chair by adjusting its position. So that adjustable range feature is included in the systems, mechanical systems like the computer chairs and the bicycles, where the people of the different heights can use the mechanical systems which are being designed by the organization. The design for average, this principle of the design for mechanical systems is used when there is no specific group of the population who can use a mechanical system, like a tap or the location of the switchboard in public place. The switchboard or tap in public place can be used by a small kid also, by children, by adult person, or means the variety of the people can use a given device under those conditions. The design for average is used, which indicates that this design will not be optimum for anybody, but it will cause the less inconvenience to all those who will be using the given mechanical system. So in designing of the mechanical systems, the three principles are basically used. So which of these three principles is to be used for designing a given mechanical system, decision on that is taken whether a component or the mechanical system is to be designed for the extreme people with the extreme anthropometric features, or the people for people with the variety of the anthropometric data, or the people where entire range of the people who can use a given mechanical system. So other steps
which are there in design of the mechanical systems using anthropometric data are like deciding the percentage of population which is to be accommodated. Like this principle is considered, means this percentage of the population is decided in case of principle for extremes and principle for the adjustable range. The range, adjustable range is decided in such a way whether 95 percentile of the people will be covered or 90 percentile of the people will be covered or 99 percentile of the people will be covered by a given adjustable range. It becomes uneconomical to design a mechanical system covering the 100% range of the people with the wide variety of the anthropometric data. It becomes uneconomical because with a very narrow range, with very narrow adjustable range of the features, most of the people are covered. For example, like 10% adjustable range or 10 centimeter adjustable range can accommodate the 95 percentile people, while 15 centimeter adjustable range may be required in a bicycle for 99 percentile of the people, while 100% of the people, 100 percentile of the people coverage needs an adjustable range of 26 centimeter. So unnecessary increasing the adjustable range will increase the cost also, but which may not increase the significant percentage percentile of the people who can be accommodated using the adjustable range. So what is the percentage of people population to be accommodated by the given design? Regarding that, decision is taken first, and then anthropometric data is obtained from the record, and the central tendency of the anthropometric data which is of use for a given design, and it's a spread in form of range or standard deviation are calculated, and if required, suitable allowances are also considered in designing of the mechanical systems, say like thickness of the socks in design of the shoes is considered, or cloths thickness is considered in designing of the relevant items. So here designing for control and display devices, there are many important things which are kept in mind so that the operator can use them effectively without much error. A control device is a control is a device that transmits the signal into a system or the mechanism. For controlling a given mechanical system, the devices are used and which transmits the signals to the system or mechanism so that the systems respond in different way. So a control device is basically a control is a device that transmits the signal into the system or the mechanism so that it changes its response as per need of the information to be transmitted. The different forms of the control devices are used to perform the desired functions. For example, like the push buttons, toggle switch, knob, thumb and hand wheels and the keyboards are typical control devices. When these are operated, system responds to when these devices are operated. Most of these are these control devices are activating the system, while the keyboard is mainly used for entering the data in the system. For efficient use of the control devices, it is necessary that these are identified by the worker easily and so that the required function can be performed. To avoid the use of wrong controls, it is necessary that these devices are easily identified and recognized by the operator during the operation, while otherwise if the operator is not able to recognize these control devices,
easily, then it can lead to the inefficiency, accidents, and continued wrong use may lead to the frustration in use of the control devices. That is why the control devices should be designed in such a way that they can be recognized easily to reduce the set problems and for having the improved performance. Proper control recognition system should be used in design of the control devices. This can be achieved by use of the proper coding of the controls. Various methods have been developed over a period of time for coding the control devices. These methods are based on like shape and texture coding. Is different types of the coding methods are there for control devices. One is shape and texture coding, locational coding, size coding, color coding, and level coding. Each coding method has got its own advantages and the limitations. So depending upon the anthropometric data and the working conditions, the strain conditions or the working conditions in which a worker is working during the operation, all those are kept in mind while selecting any of these coding method for control devices. So we will cover first the shape and texture coding method. The desirable feature of this coding method for control device is that it can be used for low illumination conditions and the touch operation is possible. Undesirable features of location coding methods are limited number of controls can be coded, more space requirements, and identification of the control is not certain by this method. So these unlimited feature, these are the undesirable features related to the location coding method. The size coding also has the desirable features like the low illumination conditions. Under the low illumination conditions, this method can be used and touch operation is possible, and the limited number of controls can be done, can be coded by this method. More space is required in size coding for coding the number of for coding the controls, and identification of the control is also not certain in size coding, especially when gloves are used. Color coding is useful for visual identification, and the moderate number of controls can be coded by this method, but it is necessary that the codes are viewed directly and the good illumination conditions are there, and adequate color vision of the operator is also needed for successful use of the color coding. For selection of the optimum color optimum coding method for controls depends upon the number of controls which are to be covered and included in the given area, and the available panel space is to be seen, the level of illumination available in the working conditions, and the operator's workload. This indicates the mental and the strain conditions of the worker. So these points are kept in mind while selecting the coding method. The criticality of the control function is also kept in mind, like any error in the operation of the control function can lead to the accidents or severe economic losses also. So these points are kept in mind while selecting the proper coding method. The control and the display ratio is the one important parameter which is used in design of the control and display devices. The control and the display ratio indicates the sensitivity of the control device. When a small movement of the control is required to give the large movement of the display, then we have the low control to the display ratio. The control to the display ratio indicates the distance of the control movement to that of the display
movement is called control display ratio or C by D ratio. The low control and display ratio results in a small control movement will produce the large movement of the display movement, and which in turn allows the gross adjustment, but it becomes difficult to achieve the precise setting using the control and display device which offers the low C by D ratio. On the other hand, high C by D ratio permits results in the large control movement for a small display movement, which allows the precise setting for achieving the desired function. So the C by D ratio is very important in designing the control and display devices. Low C by D ratio is used when gross adjustments in the readings or the control settings are required, while the high C by D ratio is used when precise settings are to be used or very accurate setting is required. The display devices are those devices which are used to show the information about the status of the system. The system may be in a static or the dynamic condition. The different types of the display devices are used which may give the data in form of quality or the qualitative data, like the display devices which are used typically in the fan regulators, where we find either 1, 2, 3, 4, 5 in the fan regulators actually doesn't indicate the speed of rotation of the fan. It is just symbolic that is when the control position is changed, it affects the speed of the fan. 1 is for minimum, 2 is for somewhat higher, 3 is for further higher. So the qualitative the display devices where the numbers or the alphabets being used doesn't represent the actual value of anything. The quantitative data will be showing the numerical value of the different characteristics, like pressure pressure is indicated in terms of the kgf per centimeter square, or the temperature is shown in degree centigrade or degree Fahrenheit. The status of the system means the status of the system can be shown by the display devices in form of the red or green signals in the operation theater, where red indicates that the operation is going on, and the warning is indicated by the presence of the red signal or some sort of the siren. Identification is shown by the color coding, for example railway signals in the railways. The representation display where symbols, charts and the diagrams are used to show the things desired. Alphanumerics are also used to display the things in form of the signboards and the placards. Now I would like to summarize this presentation. This presentation we have seen that there are three principles which are commonly used for designing the workplace, for use of the human body, and for designing the tools and equipments which are to be used by the operator during the work. And at the same time we have also seen that the different principles which are used for designing the control and the display devices. Thank you for your kindness. What we have seen is the principles of motion economy, which are 22, and they have been told to you by Professor Dwivedi
that how they can be used for the design of workplace and tools and equipments and the controls. So we come to a very basic fundamental concept, that is fundamental hand motions. Gilbreth gave the concept of fundamental hand motions, and he gave 17 fundamental hand motions and called them as thermalics. Right? Thermalics. 17 fundamental hand motions and called them as thermalics. They are also called as motion elements. They are mutually exclusive. They can be shown through even figures or something like that. They can be shown through pencil, color pencils. They can be shown through short words. So there are 17 which the thermalic gave, and then there were changes in this for this system. The first is search. Search. I'll just do one thing. I'll present from the notes. This is definition of fundamental hand motions. The first is search. I'll give you this note, you can to you. Just understand it and then you can write it afterwards. It is that part of the work cycle where eyes and hands are hunting and groping for the object. देखिए, आपके काम करने के साइकिल में ये वो पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है, जब आपका हाथ और आंख एक साथ किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए काम करते हैं, हाथ भी और आंख भी। और ये शुरू तब होता है जब आपकी आंख या हाथ ने शुरू किया, और ये पूरा कब होता है? जब उसको पा गया। मगर आप मान लीजिए आपकी आंख से आप सर्च कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, कई रखे हुए ऑब्जेक्ट, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, तो देखना कोई टूल ऐसा, वो सर्च कहलाएगा। आपने ढूंढना शुरू किया और आपको मिल गया तो वो सर्च कहलाएगा। ये टेबल है, देखिए थर्मलिक्स की। तो ये जो है एक मेंटल रिएक्शन है। जो सर्च था एक मेंटल रिएक्शन हो गया कि भाई आप दिमाग से सोच रहे हैं, आप कोई चीज को देख रहे हैं, और आपने इसमें फिजिकल मूवमेंट बहुत कम था, इसीलिए हमने कहा इंटीग्रेटेड। बुक में लिखा है और, ठीक, तो इसको फिर लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया और सर्च को सेलेक्ट के साथ मर्ज कर दिया। ठीक, एक प्रिंसिपल और था फाइंड। फाइंड जो था वो मेंटल, टोटली मेंटल था, कि आप कोई चीज को फाइंड कर रहे हैं दिमागी तौर से। आपने कहा ये यहां पे रखा हो सकता है, यहां मिल जाएगा, यहां देखा जाएगा। दैट वाज फाइंड एंड दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम द फंडामेंटल मोशन। तो आप ये समझिए कि सिलेक्ट में और सर्च में क्या डिफरेंस है। सर्च में आप आई या हैंड को यूज कर रहे हैं किसी चीज को ढूंढने के लिए, और सेलेक्ट में आप एक ऑब्जेक्ट को बहुत से ऑब्जेक्ट में से ढूंढ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल चीज है सर्च और सेलेक्ट के बीच में डिफरेंशिएट करना, इसलिए अब लोग इसको सिलेक्ट ही बोलते हैं।
लेकिन एक फर्क है, अगर एक आपके पास टूल बॉक्स है, उस पर तरह तरह के टूल लिखे हुए हैं, ठीक, और उसमें से आपको एक टूल ढूंढना है, उसमें हैमर भी है, स्पैनर भी है, तो आप हैमर ढूंढ रहे हैं तो वो हो गया सेलेक्ट, और आपके पास एक स्पैनर का बॉक्स है, उसमें हर तरह के स्पैनर है, अगर ये ढूंढ कर रहे हैं तो ये हो गया सर्च। जब सिमिलर आइटम्स में करेंगे तो हो जाएगा सर्च, और जब डिसिमिलर आइटम होंगे तो हो जाएगा सेलेक्ट। ये डिफरेंस आएगा। फिर अब जो है ग्रास्प। ग्रास्प मतलब है किसी चीज को होल्ड करना, ऑब्जेक्ट को उस हिसाब से ऐसे करना कि उसकी फिंगर उसके अराउंड आ जाएं। किसी चीज को उठाने से पहले उसको होल्ड करना कि फिंगर उसके अराउंड आ जाएं। ग्रास्प। ग्रास्प बिगिन व्हेन द हैंड और फिंगर मेक फर्स्ट कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। जहां आपने कांटेक्ट शुरू किया फिंगर के साथ, वहां ग्रास्प शुरू हो गया, और जहां आपके टोटल कांटेक्ट हो गया तो ग्रास्प खत्म हो गया। तो ये सोचिए, ये फंडामेंटल हैंड मोशन जो है ये बहुत ही मैक्रो लेवल के मोशंस हैं, बहुत ज्यादा मैक्रो लेवल के मोशंस। तो ग्रास्प जो है, आप कोई चीज ग्रास्प कर रहे हैं, कोई टूल ग्रास्प कर रहे हैं, पहले तो आपने टूल को सर्च किया, सिलेक्ट किया, फिर आपने ग्रास्प किया। ग्रास्प में आपने उंगली लगाई टूल के लिए, जहां उंगली लगाई ग्रास्प शुरू हो गया, जहां उंगली ने पूरा पकड़ लिया तो वो ग्रास्प खत्म हो गया। ये इंस्टेंटेनियस होता है, मैक्रो सेकंड में होता है, और ये एक। फिर एक है ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, फोर्थ। जब आप खाली हाथ किसी ऑब्जेक्ट को लेने के लिए मूव कर रहे हैं, आपका हाथ खाली जा रहा है या बिना किसी रेजिस्टेंस के मूव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एम्प्टी। ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाथ मूव कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बट एम्प्टी है, इसमें कोई लोड नहीं। लेकिन उसी पे अगर लोड हो या रेजिस्टेंस के खिलाफ आपका हाथ जा रहा है, आप कोई चीज खींच रहे हैं, कोई आप दबा रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट लोडेड हो गया। ट्रांसपोर्ट एम्प्टी और लोडेड में फर्क क्या है कि जहां पे रेजिस्टेंस है, कोई वेट है, तो वो लोडेड है, जहां कोई चीज नहीं है तो वो एम्प्टी है। उसके बाद में एक थर्बलिक है होल्ड। होल्ड मतलब आपने कोई चीज ग्रास्प करी, उसके बाद का जो होता है थर्बलिक, वो होल्ड होता है। रिटेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट हैज बीन ग्रास्प्ड। और यहां पर होल्ड करते वक्त में ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट नहीं होता। होल्ड ये है, आपने एक स्पैनर था, आपने उसको ग्रास्प किया और वहीं पकड़ लिया, उसको होल्ड है, वो होल्ड हो गया। नेक्स्ट है रिलीज लोड। रिलीज लोड है किसी ऑब्जेक्ट को जाने देना, गिर जाए। आपने चौक ली और उसको छोड़ा, तो जब छोड़ेंगे तो पहले एक उंगली हल्का सा कांटेक्ट छोड़ा, फिर पूरा कांटेक्ट छूट गया, वो चौक गिर पड़ी। तो इसको बोलते हैं रिलीज लोड, लेटिंग गो ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका जब आपका कांटेक्ट स्टार्ट हुआ खत्म होना, और जब टोटली कांटेक्ट खत्म हो गया, ये बहुत ही माइक्रो सेकंड की बात है, रिलीज लोड। ठीक है, तो ये एक रिलीज लोड का आपने देखा। रिलीज लोड क्या है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि होल्ड ग्रास्प में क्या फर्क है और रिलीज लोड में क्या फर्क है। होल्ड और ग्रास्प में क्या फर्क है? ग्रास्प तो आपने स्टार्ट किया, टच किया कोई चीज को ग्रास्प करने, पकड़ने के लिए, और जब पूरा आपके कंट्रोल में आ गई चीज तो वो ग्रास्प हुआ, और जब पकड़े हुए हैं आप उसको, उसके बाद वो होल्ड हो गया। जब आपने छोड़ दिया तो रिलीज लोड हो गया। ठीक,
अब आपका 8वां थर्मलिक है पोजीशन. Turning or locating an object in such a way that it will be properly oriented to fit into the location for which it is intended. ठीक? तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि आप कहीं फिट करना चाहते हैं उस जगह पे जहां पर वो फर्दर यूज होगा. एक कारपेंटर है, वो नेल लगाना चाहता है, पहले वो नेल पुट करता है, फिर उस पर हैमर करता है. तो वो पोजिशनिंग है नेल की. तो कोई सामान पोजीशन किया जाए नेक्स्ट एक्शन से पहले, एक फिर उसके बाद है प्री पोजीशन. पोजीशनिंग अप्रॉक्सीमेट है और प्री पोजीशनिंग एक्यूरेट. ताले में चाबी लगानी है, एक्यूरेटली लगानी पड़ेगी आपको. तो बस फर्क क्या है कि प्री पोजीशन में और पोजीशन में फर्क क्या है कि अप्रोक्सीमेशन का फर्क है. पोजीशन में आपको अप्रोक्सीमेटली आपने उस जगह लगा दिया लेटर यूज के लिए, और पोजीशनिंग प्री पोजीशनिंग में एक्यूरेटली लगा दिया लेटर. जैसे आपको कोई ब्रैकेट फिट करना है तो आपने बहुत एक्यूरेटली लगाते हैं, लेकिन नेल लगाना है तो आप इनएक्यूरेटली लगाते हैं. आपने कहा ठीक नेल लगाना लगा देगा. फिर अगला थर्मलिक है इंस्पेक्ट. Examining an object to determine whether or not it complies with shape, size, color, जो attributes है उसके हिसाब से. So inspection में employee जो भी आप फिजिकल और एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको आप चेक करते हैं. तो इंस्पेक्शन जो होता है वो एक मेंटल फिनोमेना होता है. आपने कोई चीज को इंस्पेक्ट किया, आपने देखा भाई कलर उसका वही है जो चाहिए आपको, साइज वही है वही चाहिए, महक कैसा है, टेस्ट कैसा है, कैसा सुनाई पड़ रहा है, राइट. सो इंस्पेक्शन जो है आपका ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट जो आपका है वो स्पेसिफिकेशन को कंप्लाई करता है या नहीं. ये इंस्पेक्शन है. फिर है असेंबल. आपने दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा कि वो एक बन जाएं. दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा कि एक बन जाए, उसको बोलते हैं असेंबल. आपने कार में टायर डाल दिया, असेंबल हो गया. डिसअसेंबल, आपने एक बड़े ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट निकाल दिया, आपने कार में से टायर निकाल दिया, डिसअसेंबल हो गया. फिर यूज जो है मैनिपुलेटिंग अ टूल और डिवाइस और एक पीस ऑफ apparatus और पर्पस फॉर विच कैन बी. अब आप एक प्लायर लाए हैं, प्लायर का एक यूज होता है. पेचकस है, पेचकस का यूज है. स्पैनर है, स्पैनर का यूज है. तो आप उसको मैनिपुलेट करें, यूज करें तो वो यूज में कहलाएगा. कोई स्पेशल पर्पस टूल है, आप उसको उससे कुछ काम कर रहे हैं तो वो यूज में कहलाएगा. फिर उसके बाद है अवॉइडेबल डिले और अनअवॉइडेबल डिले. डिले जो कि ऑपरेटर के कंट्रोल के बियॉन्ड है, जो कि ऑपरेटर कंट्रोल के बाहर है, तो वो अनअवॉइडेबल डिले है. ऑपरेटर की बिजली चली गई, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऑपरेटर ने मशीन बंद कर दी अपने हाथ से,
वो अवॉइडेबल डिले है। वो डिले मशीन बंद करिए, ऑपरेटर ने करिए, इसको अवॉइड कर सकते हैं। और जो बिजली चली गई तो अपने आप से वो अनअवॉइडेबल है। फिर है प्लान। प्लान क्या है? इज अ मेंटल रिएक्शन व्हिच precedes the physical movement, deciding how to proceed with the job. आपने कहा काम ऐसे किया जाएगा, इसको प्लानिंग हो रही है। That is a mental reaction, mental physical movement से पहले जो काम कर रहे हैं mentally, वो प्लान है। और लास्ट है रेस्ट। जब आप काम कर चुके तो आप फैटिग के अगेंस्ट में रेस्ट कर रहे हैं, वो होगा रेस्ट फॉर ओवरकमिंग फैटिग। तो दिस इज टेल्स यू अबाउट 17 थर्मलिक्स, जिसमें आप जो है सर्च, सेलेक्ट, पोजीशन, प्री पोजीशन, असेंबल, डिसअसेंबल, अवॉइडेबल डिले, अनअवॉइडेबल डिले, प्लान, रेस्ट, ग्रास्प, फोल्ड, ये आपके। अच्छा, ये जो फंडामेंटल हैंड मोशंस हैं, ये मिला के आपका कोई भी मोशन बनाते हैं। अब आपका कोई मोशन है बॉडी का, साइमो चार्ट बनेगा तो उसमें फंडामेंटल हैंड मोशंस लगेंगे। हाँ भाई बताइए। दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फंडामेंटल हैंड मोशंस and principles of motion economy. Next time I will take up the time study. ओके सर। और हम टाइम स्टडी के लिए इसको यूज करेंगे, हम लोग अगले बार में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर। अच्छा, तो हमारी क्लास किस किस दिन होती है? थैंक यू सर। मंडे और क्लास किस किस दिन होती है मेरी? मंडे और थर्सडे होती है शायद। तो थर्सडे को जावेद साहब की भी क्लास होती है, हैं? यस सर। तो मैं मंडे को सारी क्लास ले लिया करूंगा, उससे ज्यादा आसान रहता है मुझे। ठीक है, जैसे आज हो गया। हाँ सर, मंडे में आपकी रहती है सर पहले, फिर जावेद सर की रहती है, और थर्सडे में आपकी। जैसे लास्ट टाइम मैंने किया पूरी, मैंने सब ली, इस बार मैंने पूरी ली, तो मंडे को मैं पूरी क्लास किया करूंगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, या थर्सडे को भी देख लूंगा मैं। और हमारा कोर्स अभी 2 यूनिट ही कवर हुए अभी हमारे। ये सर जो सेकंड यूनिट पीपीटी वगैरह नोट्स है सर, वो क्लासरूम में पोस्ट कर दिया कीजिए सर। हाँ, वो मैं, मुझे बताओ, मैं इसको तुम्हें देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं इस नोट्स को दे दूँ। ठीक है।